Hello class 10, welcome back to our channel. So class 10, today we are going to start our chapter 3, that is primary markets. So in the previous chapter, securities, we discussed about the securities and the primary market also, where we learned that primary market is the place where the issuers of securities have an opportunity to issue the securities and raise the capital. So here again we are going to discuss in a very detail about the primary markets and the factors also which influence the primary markets. So the first topic that we have to cover is the role of primary market. So the primary market provides the channel. This is the medium, this is the place for the sale of new securities. And here the primary market also provides the opportunities to issuers of securities. And issue कौन करता है बच्चा? Like the government as well as the corporates. And why they issue the securities? To raise resources to meet their requirements of investment or discharge some obligation. So in this point, in these three lines, three questions are covered, like the place, primary market, then who issued the securities, and why the securities has been raised or the issued. So all these things we have covered in the previous chapter also. And then all these securities, that securities which is basically issued by the government or the corporate sectors, they have like face value or at a discount or premium, and these securities may take a variety of forms such as equity, debt, etc. So to understand these lines, we have to cover the next topic, that is what is meant by face value, because this is new term for us. So when we take an example of shares or we can say security, let's see security का example लेते हैं. The nominal or stated amount, जो भी nominal amount है, जो भी amount को set किया गया है to a security by the issuer, this is the face value of security. But when we talk about the shares, then the original cost of the stock, जो कि certificate पे लिखा होगा, that is the face value. When we talk about the bonds, so bonds में क्या होगा? वो amount जो holder को maturity पे मिलने वाला है, this is the face value. So face value, we can say in a very simple language, this is the exact or the actual price, actual value. So this is on this basis, basically face values जो है different things के अलग अलग होंगे. Like issuers की अगर हम बात करते हैं security issuers की, then it is different, shares के different, and as well as the bonds के different. So here we can say as per value or simply per. For an equity share, the face value is usually a very small amount. Equity means share. Equity means like जहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इक्वल कोई शेयर करता है, कोई 2 लोग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन इक्वल डिवाइडेड होगा. सो इन दिस वे फेस वैल्यू मीन्स द एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल वैल्यू. देन द टर्म प्रीमियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीमियम मीन्स व्हेन द सिक्योरिटीज, बच्चा अगर एक्चुअल प्राइस है, सो दिस इज द, लेकिन अगर आपके एक्चुअल प्राइस से प्राइस ज़्यादा जाता है, above the face value, when the security is sold above the face value, then it is called its premium. And when the security sold at less than its face value, then it is said to be issued at a discount. So face value is the actual, then the premium is the above value, and the discount is the less value than
face value. I hope all these three terms, which are very very important, are clear. Now the next topic you can see, issue of shares. द क्वेश्चन, डेफिनेटली जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग प्रोसेस होता है वाई, क्यों होता है ये. सो हियर यू कैन सी वाई डू कंपनीज नीड टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक. सो अगेन, कंपनीज आर यूजुअली स्टार्टेड प्राइवेटली बाय देयर प्रमोटर्स. उनको प्रमोटर्स को बोला जाता है कि वो कंपनी के लिए शेयर्स कलेक्ट करें. और वो कैसे होंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए. क्यों किया जाता है? बिकॉज कंपनी के पास अपने पास इतना अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को रन कर सके. सो द कंपनी इनवाइट द पब्लिक टू contribute towards the equity and issue shares to individual investors. तो दो ही रास्ते हैं, या तो इक्विटी कोई इक्वल शेयर का मिल जाए या अपने अपने शेयर्स कर दिए जाए. दिस द वे टू इनवाइट शेयर कैपिटल. अब क्या किया हमने, इनवाइट किया ताकि हमारे कैपिटल का शेयर दे दें हम किसी को. किसको हमने इनवाइट किया? टू पब्लिक. सो पब्लिक में से हम लोगों को बुलाएंगे. पब्लिक आर इनवाइटेड हियर. सो हियर वी कैन से पब्लिक इशू. सो इट्स वेरी सिंपल. अ पब्लिक इशू इज एन ऑफर to the public to subscribe the share capital of a company. तो कंपनी इशू करता है, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है और अपना शेयर दे दिया जाता है. किस बेसिस पे दिया जाता है बच्चा? वंस दिस इज डन, द कंपनी अलॉट्स शेयर टू द एप्लीकेंट. एप्लीकेंट मीन्स दोज आर परचेजिंग. एंड on what rules, which rules are important? So as per the prescribed rules and regulations laid by SEBI. I hope this is clear. So company is definitely, it's responsible to issue the shares to the public, and this is called public issue. And the conditions, basically rules and regulations laid down by SEBI. So all नेक्स्ट यू कैन सी द डिफरेंट काइंड ऑफ इशूज. इशूज हमने पब्लिक इशू तो हमने पढ़ लिया, बट मोर इशूज आर गिवन, लाइक पब्लिक इशूज, राइट इशूज, और प्रेफरेंशियल इशूज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट इशूज. सो ऑल दीज इशूज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.